Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another topic based on the moving coil galvanometer, class 12th physics, chapter number 4, magnetic effect of current. Okay, student, today's topic based on the galvanometer, sensitivity of galvanometer. Okay, student, ये जो वर्ड है ये आपने काफी सुना होगा. ठीक है, हमारे दांतों में भी. ठीक है, जब हम बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म कुछ करते हैं तो अचानक सा कुछ ना कुछ फील होता है. उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सेंसिटिविटी. दैट मीन्स इन द केस ऑफ द फिजिक्स a ratio between the angle and amount of current, a ratio between the angle and amount of current are known as the sensitivity of the galvanometer. Okay student, it is represented by S. पहले आप माइंड में याद कर लीजिए 110%. S equal to phi by I. What is the mean of the phi? That is my problem. What is the mean of the I? It's all my problem. Student, we will start with the simple galvanometer. What is this? This is a rectangular coil. ठीक है, अंडर द रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्ट अ सॉफ्ट आयरन कोर. rectangular coil, number of rectangular coil will be equal of capital N between powerful horse magnet in the shape of a hollow cylindrical. Okay student, hollow cylindrical, that means just like this. अगर जिसके दो पोर्शन करेंगे so we getting the north pole and south pole. Spherical curve created by north and south pole. Okay student, and we know that about the property of magnetic lines. Magnetic lines always passing from north to south outside of magnet and south to north inside of magnet. Okay student, we know that very well. The direction of magnetic lines always नॉर्थ टू साउथ. फर्स्ट वन सिर्फ इतना हमने सीखा, यहाँ से नॉर्थ टू साउथ. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? दिस इज अ टर्मिनल T1 and this is a terminal T2. T1 and T2 both are the terminal which consist any external source or any external battery. Due to battery amount of current will be equal of capital I. हर चीज को समझिए, नहीं तो ये डेरिवेशन में फाई क्या है, आई क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है समझ नहीं आएगा. रेक्टेंगुलर कॉइल, rectangular coil, the length and breadth will be equal of small l and small b. Length of coil, let us consider the length of coil will be equal of small l and breadth will be equal of small b. Student, number of student have the doubt, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आता है. Let us consider this is a shape of rectangular coil. बट जब यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस जाएगी, मैग्नेटिक लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अगेन साउथ टू नॉर्थ, सो रोटेशन विल बी स्टार्ट. ओके स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है डिफाइंड द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, दिस इज अ कर्व शेप, दैट मीन्स अ रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द मीन ऑफ द रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड? अगर जो ये जो फील्ड होता है ये रेक्टेंगल के फॉर्म में होता तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस, बट इन द केस ऑफ द रेडिकल दैट मीन्स अ सिलेंड्रिकल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. याद रहेगा. ठीक है, आप खुद ही सोचिए कि सर मेरे पास जो ये रूम है ये पूरा कैसा है? फुटबॉल बॉल की तरह है और मैं उसमें किसी एक डॉटेड बॉल को छोड़ूंगा तो ठक 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 विदाउट एनी disturb. Okay student, that means the intensity of magnetic field will be maximum due to radical magnetic field, and we know that very well. The property of magnetic lines always found in a complete curve. मतलब जो magnetic lines नॉर्थ से साउथ में जाएगी, ओके स्टूडेंट, नॉर्थ से साउथ तो वापिस से साउथ से नॉर्थ में आएगी, सो रोटेशन विल बी स्टार्ट. ओके स्टूडेंट, रोटेशन विल बी स्टार्ट बट कॉइल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल. देखिए सर,
ठीक है, ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर है, बट ये जब रोटेट होगा तो ये जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। जब ये सिलेंड्रिकल कॉइल होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस इससे क्या करेगी, मैग्नेटिक लाइंस क्या करेगी, टच करेगी, तो एंगल with the center will be equal of 90 degree. This is a property of tangent. Okay student, by the property of tangent we can say angle will be equal of 90 degree. समझिए, इससे हमने ये समझा और यहाँ पर हमने ये समझा एंगल will be equal of 90 degree. Next one student, what is the mean of the pivot? What is the main purpose of galvanometer? Galvanometer is a device which used to indicate the direction of flow of current. सर जैसा हमने बाइक में देखा होगा, कार में देखा होगा, स्पीडोमीटर इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ 0 एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, बट इन द केस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर सभी में इंडिकेशन 0 कहाँ पर होता है, सेंटर में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे, पिवोट। क्या बोलेंगे, पिवोट। जैसे जैसे करंट आएगा तो स्प्रिंग में क्या होगा, रोटेशन होगा। ओके स्टूडेंट, जैसे रोटेशन होगा तो पिवोट में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स एंगल विल बी इक्वल ऑफ फाई। यहाँ पर दो एंगल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वन थीटा एंड सेकंड वन इज द फाई। व्हाट इज द मीन ऑफ द थीटा? थीटा दैट मीन्स द एंगल by the coil with respect to magnetic field, and here phi that means the angle with the period with respect to initial condition. Okay student, both are the different theta and phi. Now the shape of the coil, here we define the shape of coil. Coil always in the form of rectangle. That means the length will be equal of small l and breadth will be equal of small p. Let us consider the length of coil will be equal of small l and breadth will be equal of b. Okay student, now final diagram would define the forces. Forces that means F1 and F2 both are equal. Equal in the case of the magnitude, but both are the opposite to each other. Student, we know that about the Fleming left hand rule, Maxwell right hand rule and the Lorentz force. What is the mean of the Lorentz force? When any moving charge particle moves in presence of electric field and magnetic field, both these type of force are known as Lorentz force. Suppose this is a moving charge particle and electric field and magnetic field both are present, so this type of force are known as Lorentz force. The value of Lorentz force will be equal of BIL sin theta. Okay student, but we know that very well, the theta that means the angle by the coil due to magnetic field will be equal of 90 by the definition of tangent. So we getting the value of F1 in the form of BIL sin 90. The value of sin 90 always will be equal of 1. Sin 90 equal to 1 such that F1 equal to BIL into 1. So F1 equal to BIL. Student, the basic fundamental theory of moving coil galvanometer, both are opposite to each other and magnitude are same. So we can say F2 also will be equal of F1 and the value of F1 will be equal of BIL. Okay student, what is the mean of the L? L that means the length. It is represented by स्मॉल एल. ओके स्टूडेंट, कैपिटल एल है तो कैपिटल एल लिख लीजिए, आपने स्मॉल एल लिखा तो आप स्मॉल एल लिख लीजिए. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन जस्ट फॉर द F1 एंड F2. नाउ वी डिफाइन द वैल्यू ऑफ टॉर्क. व्हाट इज द मीन ऑफ द टॉर्क? वी नो दैट वेरी वेल. Torque that means a force. When two forces are opposite to each other, magnitude are same and direction are opposite, these type of force are known as torque. The value of torque. So student, by the value of torque, tau will be equal of any one force
that means F1 and perpendicular distance. What is the meaning of the perpendicular distance here? Student, in triangle ABC, the front side of 90 are known as the hypotenuse, the front side of the angle are known as the perpendicular. So perpendicular side will be equal of BC. Okay student, the value of F1 will be equal of BIL. ओके स्टूडेंट, एंड BC. ध्यान से देखिए BC कैसे निकालेंगे. इन ट्राइंगल ABC by use of sin theta equal to perpendicular upon में hypotenuse. Perpendicular, that means BC, and hypotenuse, that means AB. Okay student, but we know that very well AB will be equal of small b. Okay student, ध्यान से देखिए. सबसे पहले हमने क्या करा, we have to calculate the value of F1 and F2. Firstly पहले F1 F2 निकाला है, फिर ट्राइंगल लिया हमने ABC sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular, that means BC, hypotenuse, that means AB. AB will be equal of small b. By cross multiply, we getting the value of BC equal to B sin theta. Equation number second. By use of equation number first and second, we getting, आपको समझ आ रहा है, F1 will be equal of BIL and BC will be equal of B sin theta. So finally torque will be equal of BIL into B, length into breadth. We know that very well, simple mathematics, length into breadth will be equal of area of coil, such that we can write in the form BIA sin theta. Okay student, what is the mean of the theta? Theta will be equal of 90. When theta will be equal of 90, when theta will be equal of 90, torque will be equal of torque maximum, such that torque maximum will be equal of BIA sin 90, but sin 90 will be equal of 1. Okay student, so finally we getting the last step, tau maximum equal to BIA, equation number third. स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क. बट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, देखिए कॉइल डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एफ दैट मीन्स अ फॉस्फोरस वायर. ठीक है, कॉइल विल बी रोटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे जैसे ये रोटेट होगा तो यहाँ पर वायर भी क्या होगा, रोटेट होगा. दैट मीन्स अ रीस्टोरिंग फोर्स. Restoring force, that means a coupling force, also known as the torque, such that here again torque directly proportional of phi. What is the meaning of the phi? Student, here we taking the two types of the angle. First one is the theta and second one is the phi. Theta, that means the angle with the coil with respect to magnetic field, and phi, that means the angle with the pivot with respect to initial point. ठीक है, then torque will be equal proportional replaced by any constant here defined by C. What is the meaning of the C? C is a standard constant for the restoring force. So now equation number 4. By use of equation number 3 and 4, we can say both are similar. So BIA will be equal of C phi. Student, here BIA, that means a torque for a single coil. ठीक है, let we consider the total number of coil will be equal of capital N, such that written capital N. Okay student, यहाँ पर टॉर्क है, एक कॉइल के लिए n कॉइल के लिए लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय n. सो फाइनली
the value of I will be equal, the value of I will be equal C by B A N into phi. Student, we know that about the definition of S, S will be equal of phi by I. That means we need ये इसके इंटू में सामने वाले के अपॉन में. ओके स्टूडेंट, देन फाइनली मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं. सो लास्ट स्टेप, फाई बाय आई विल बी इक्वल ऑफ बी ए एन by C. Since we know that very well, phi by I will be equal of capital S. Capital S, that means a sensitivity of a galvanometer, such that S will be equal of BAN by C. Okay, student. I hope you are getting the proper solution related to this derivation. So student, we can say S. First one, S is a directly proportional of B. First one, S depends on B. Second one, S also depends on A. Third one, S depends on N. And S is a inversely proportional of C. What is the mean of B? B, that means the intensity of magnetic field. When intensity of magnetic field will be increased, the value of S will be increased. When the value of area, when area will be increased, the value of S will be increased. Number of turn will be increased, S will be increased. C, that means a restoring coupling constant is a inversely proportional of S. मतलब ये increase तो ये decrease होगा. Okay student, I hope you getting the proper solution related to last topic based on the galvanometer, sensitivity of galvanometer. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajodha. Student, please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much.